अग्रवाल सर, आपको लगता है कि ये खतरनाक हो सकता था, किसी सांसद महोदय को चोट पहुंच सकती थी? नहीं, अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है। जरूर हो भी सकता था, उनको पकड़ लिया है सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही, तो वो कोई डैमेज उस ढंग से नहीं कर पाए। तो लेकिन यहाँ तक आना और दर्शक दीर्घा से कूदना एक गंभीर विषय है। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, आप तो अध्यक्ष थे उस समय, सदन की कार्रवाई चला रहे थे, पीठासीन थे। आपको लगता है सर कि वहां आप भी एकदम से चौंक गए, खड़े हो गए? हम दिखा रहे हैं अभी भी तस्वीर आज तक पर, आप भी एकदम खड़े हुए, आपने क्षण गवाए बिना लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित क्या वो तो देखिए आवश्यक ही था। हाँ। हाउस को स्थगित करना वो आवश्यक था उस समय, और उसके बाद भी थोड़ा सा निर्देश देना या जो भी संभव बात है उसके लिए कहना ये आवश्यक था, तो वही मैं कर रहा था। सर, आपको इस लड़के को देख के क्या लगा? क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? मैंने नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है सर, देख रहे हैं हम, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और सर, आप ही के सदन में, सुनिए ना सर, मैं कुछ नहीं, मैं इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा, अनुमान मत लगाइए सर। अग्रवाल जी, आपके सदन में देखिए वो धुआं दिख रहा है, वहां पर दो लड़के थे, एक ने पूरा धुआं कर दिया है। वो जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, क्या हुआ था, कैसे पटाखे थे वो, आप उसके बारे में कुछ बताइए। वो कोई छोटी गन टाइप की होती है, पतली सी, वो चला रहा था, उसे पिट 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 की आवाज भी आ रही थी। अब वो क्या है तो जांच में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं काटा। हाँ नहीं, वो तो जांच का विषय है बाद में, लेकिन सर ये कितना गंभीर है? और थोड़ा धुआं नहीं सर, काफी धुआं लग रहा है। कोई भी व्यक्ति गंभीर तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी जांच पता चलेगा किस प्रकार का वो उसमें केमिकल था, क्या मैकेनिज्म था। आप इतनी धैर्य रखिए, अभी एक चूक हुई है, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। सर, सबसे सुरक्षित जगह की जाए। अग्रवाल सर, ये सबसे सुरक्षित जगह, और देश भर के प्रतिनिधि, आप लोग जनता के प्रतिनिधि, पूरे देश के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद, और वहां पर एक व्यक्ति इस तरह से घुस आता है, दो व्यक्ति पटाखे लेकर, जूते में कोई सामान लेकर पटाखे वहां पर फोड़ देता है। ठीक है ना, मैंने कहा ना, ये चूक हुई है, उसके संबंध में जांच होगी, इससे अधिक अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, अभी तो अग्रवाल साहब, आप और हम अनुमान ही लगा रहे हैं सर कि क्या हो सकता है, कौन हो सकता है। अभी तो अनुमान ही लगाएंगे ना। और ये बात ठीक है कि गंभीर चूक हुई है सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है सर। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि जो वही तो मैं बता रहा हूं, मैं उसके अलावा उससे अधिक थोड़ी मुझे पता है। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल, ये मेरठ से सांसद भी हैं बीजेपी के, और पीठासीन अधिकारी भी, यानी कि उस समय संसद की कार्यवाही का संचालन अग्रवाल जी ही कर रहे थे। अग्रवाल इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी who was on the chair at that point in time, now overseeing the proceedings in their house. Speaking with India Today's sister channel Aaj Tak, there he says that he did what was required at that point in time. Immediately adjourned the house when he realized that there was some chaos. Pictures, in fact, from Lok Sabha, inside of Lok Sabha today, where there is a man, goes by the name of Sagar. We don't know yet the name of the second person who's been detained. A big security breach that has happened inside Parliament today, 22 years after, in fact, the horrific attacks on Parliament House on the 13th of December. On the right side of your screen, these are pictures, in fact, that are being posted by DMK MP also. In fact, TMC MPs have also been, other members of Parliament have been putting out these pictures as well of the chaos that was seen inside the Parliament in Lok Sabha. Still images on the left side. In fact, the MP who was in fact speaking at that point in time now looked visibly confused, turned back and tried to get a sense of what's going on. The other MPs panicked. There was visible chaos where many of them in fact tried to get hold of this person, Sagar, who from the visitors gallery jumped straight into the chamber, then ran from one table to the other, in fact jumped from one table to the other, that you see in those pictures that have been put out. And MPs tried to catch him. Moments after that, within a few seconds, this is what Arvind Sawant told India Today a few moments ago, that within seconds, the security got hold of him and took him away. It's a big concern with a huge security breach that has happened in Lok Sabha today. To tell our viewers, from what members of Parliament have been telling us, is that essentially this guy took off something from his shoe.
and that's when they saw yellow smoke or yellow gas inside Lok Sabha at that point in time. And pictures of that yellow gas is what you see on your screens. Now, there were two incidents to tell our viewers, that one from inside Lok Sabha, where this man, Sagar, stopped briefly after he realized that he would be now, there was no way for him to move. You can see that in those pictures. Then he stopped and he pulled off something from his shoe. Visitors, remember, are not required to take off their shoe. However, they are frisked thoroughly once they are a part or given the permission to be a part of the visitors' gallery. And from his shoe, he took off something that then led to this huge yellow smoke that many MPs are describing. Outside Parliament, these are pictures coming in from Vijay Chowk, which is right outside Parliament. That's where most journalists essentially are. That's where the parking of the Parliament House is for journalists as well, for various TV news channels. That's where we park all our OB vans and we stand lives. That's where these protesters were found, creating commotion. We'll try to, in fact, put out that, report that my colleague Amit also sent us. In fact, he spoke with one of the protesters, but these are pictures of chaos at Vijay Chowk, where again a similar yellow gas and pink gas, colorful gas was used by the protesters. Paulami Saha tracks the parliament for us. Paulami, this is a huge breach. Now, Paulami, we've seen some protests at Vijay Chowk all the time, haven't we? But something like that happening inside Lok Sabha is unprecedented, isn't it? Absolutely. This is very shocking, especially because this comes on a day that, just earlier this morning, all of these parliamentarians led by the Prime Minister, the Lok Sabha Speaker, were inside the Parliament premises commemorating the memory of those who laid down their lives trying to keep the Parliament secure on the 13th of December 2001. On such a day, of course, those who went inside Parliament and that protest that you saw outside Parliament as well meant to use this as a day to mark their protest as well. But this is a huge security breach. The fact is that you can see that these individuals entered using visitors' passes that were signed off by some member of parliament, which will, of course, be a matter of investigation, because we believe a lot of MPs are currently calling their offices and their staff to see who did they issue these visitor passes to. Of course, an MP cannot be individually held responsible. Sometimes the officers sign off on passes for various individuals who want to come in and watch parliament proceedings from their constituencies, etc. So that does happen, but this is not the first time. I have recently also, another such instance has happened last year as well, when again a similar instance of, an MP signing off on passes happened, and then those individuals then created a ruckus inside the house itself. This is the new parliament that we're talking about, and this is a huge security breach. You can see that these two individuals jumped from the visitors' gallery, then jumped from bench to bench before being overpowered by the members of parliament themselves, because they were immediately in the vicinity and alert to the activity that happened around them before, of course, the parliament security rushed in. But before that, they had pulled out this canister from their shoe, allegedly, which emanated this sort of colorful gas. It could have been anything. It could have been harmful. It could have injured people over there. It could have harmed them. And this is a huge security breach. And there will be, of course, a very thorough investigation as far as, security protocols are concerned in terms of visitors that are coming in. Sneha, because I cover Parliament, I'll tell you this, over the last session, since the special session and since a new parliament building has, become functional and operational, we've seen a lot of visitors who are coming in, because it's a new parliament building, probably more passes are being issued, many huge groups of visitors, tourists. बिल्कुल बिल्कुल उनको डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद बिल्कुल सही डिटेन करने के बाद
सही ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहां पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहां पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। और आप तस्वीरों में देखिए सईद कि जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, दो लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहां पर काफी संख्या में वहां से आए और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं सहित उनको भी यहां पर बुलाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त यहां पर कर दिए गए हैं।